we were talking about friction in the last class, and I told you that there is a case 1, and case 1 is where one surface is fixed, and in case 1 there is scenario 1 where the surface uh, let me not call it the surface, call it the block is the movable object is stationary, or it is just not moving. Very surprisingly, it is just moves. Right. So please try to understand what I have written. So there is a block, and there is friction here, and I have applied a force F. Mass of the block is m, and I will say that either block is stationary, or I will say that the block just moves, or I will say the block just does not move. All these three things are scenario 1. And these two things are same conditions. Right? So the block just moves and the block just does not move. ये दोनों statements सेम मैथमेटिकल कंडीशन कन्वे कर रहे हैं. ठीक है ना. अब ऐसा क्यों है ये मैं अभी बता रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू digest. This is something that you have to remember, that a block just moves and a block just does not move are conveying the same mathematical condition. Okay. Now please remember that we have 6 diagrams from the last class. Right? 6 डायग्राम है. मैंने बोला था सब में स्पेस छोड़ने के लिए. And I was talking about let me go back to this page. I was talking about the magnitude of friction and the direction of friction. Now we had defined something called F applied, remember, which was the sum of forces parallel to the interacting surfaces, and these sum of forces must be, remember, excluding friction. सब याद है ना सबको. मेरे को लगता है सब लोग भूल गए हैं. Everybody remembers this, right? कल ही हुआ था 24 घंटे पहले. सबको याद है ना ये? Right. So I told you
that the direction of friction is opposite to the direction of F applied. Right? यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं. So now what I want to do is I want to talk about the magnitude of friction, right? And to talk about the magnitude of friction, I will कौन सी अब लास्ट स्लाइड कौन सी है? ये वाली है, ये वाली चाहिए. तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. यस टाइप मत करो. हो गया. स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है. So I want to do an experiment, right? अब हम क्लास में होते तो मैं आपको क्लास में करके दिखाता ये एक्सपेरिमेंट, but I think I can convey this. So let's say that we have a block on the floor, 10 kilograms. Okay, you can visualize this block as your chair, maybe. Now I apply a force F. I apply a force F. These are the things that I notice. When F is equal to 1 Newton, the block does not move. When F is equal to 3 Newton, block does not move. When F is equal to 8 Newton, block does not move. When F is equal to 10 Newton, block just does not move, or I can say that it just moves. And when F is greater than 10 newtons, block definitely moves. Right? So these are my observations for this experiment. What is happening? What is happening? So let me draw a free body diagram of the 10 kg block. And let me draw the forces. So we have 10G acting downwards. We have a normal reaction acting here. And we have F here. Remember that these are the interacting surfaces. So I will draw a horizontal vertical axis. And then I will write that this quantity is F applied. Right? And like we discussed, the direction of friction must be opposite to F applied. So now I'm going to draw the friction on the FBD, right? This is the ultimate aim. अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स किए उसमें जो भी एफबीडी बनाया उसमें फ्रिक्शन नहीं होता था, लेकिन अब जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हम एफबीडीज में फ्रिक्शन को इंक्लूड करेंगे. तो एक बार जब एफ अप्लाइड निकाल दिया तो फ्रिक्शन को एफबीडी में इंक्लूड किया जा सकता है. अब एफबीडी को मैंने अपग्रेड किया, अपडेट किया, और ये मैंने फ्रिक्शन यहाँ पे. Okay, right? Everybody is following me. Now,
F applied is 1 Newton and the block does not move, का मतलब ये हुआ that the friction force is also equal to 1 Newton. Okay? अगर मैंने F applied लगाया तो ब्लॉक मूव नहीं हुआ, 1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव नहीं हुआ, इसका मतलब कि फ्रिक्शन 1 न्यूटन है। आपने अपने चेयर को 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, हल्का सा फोर्स लगाया, उंगली से टच किया बस, और चेयर आगे मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन उसके ऊपर फोर्स को मैच कर रहा है। When I increase the applied force to 3 Newton, the block still does not move. This means that the value of friction has now changed to 3 newtons and friction is matching the applied force. Okay? Friction matches the applied force. फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो गया। हो क्या रहा है? रिमेंबर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो क्या रहा है? वो जो पीक्स एंड वैलीज हैं वो आपस में इंटरमेश्ड हैं। अब मैं ऊपर वाले सरफेस को मूव करना चाह रहा हूँ तो ये पीक्स एंड वैलीज इस मोशन को रोक दे रहे हैं। हाँ, फ्रिक्शन को हम वेरिएबल बिल्कुल है, वेरिएबल, यस यस, in fact it is more than variable. In textbooks you'll find that they will write friction is a self adjusting force. So friction is a dynamic concept. Okay? It is unlike the other forces that we have seen before. Friction is a dynamic thing. It can change. Okay? It can not only change its magnitude, but it can also change its direction. But for the moment, we are not going to change the direction of friction. We are only considering how the magnitude of friction changes. Direction is opposite to F applied, that is laid down already. तो जब मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, आप अपने चेयर पे थोड़ा सा और फोर्स लगाओ such that the chair does not move, then it is guaranteed that friction is matching the force that you have applied, and therefore the block does not move. When F is equal to 8 newtons, yes, when F is equal to 8 newtons, the block does not move. इसका मतलब कि फ्रिक्शन की भी वैल्यू 8 न्यूटन है. Okay? When F is equal to 10 Newton, right? Now we come to the interesting bit. When F is equal to 10 Newton, block just does not move or just moves. दोनों स्टेटमेंट में यूज कर सकता हूं. इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन है. तो जब मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, फ्रिक्शन ने मुझे मैच किया 10 न्यूटन से, लेकिन ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी है. ये उन पीक्स और वैलीज के ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए हैं. अगर मैंने 10.00000001 न्यूटन भी लगाया तो ये पीक्स एंड वैलीज टूट जाएंगे और ये ब्लॉक आगे मूव करना शुरू कर देगा. Right? Therefore, both these statements are valid because F is equal to 10 Newton is the boundary condition. 10 से just नीचे रहेंगे, block will not move. 10 से just ऊपर हो जाएंगे, block will definitely move. Therefore, at 10,
we will say that the block just does not move or the block just moves. Both these statements accurately describe what is going on. Now, what will happen when F is greater than 10 Newton? Well, friction has reached its maximum value, right? And if it has reached its maximum value, तब उससे ज़्यादा फ्रिक्शन कुछ नहीं कर सकता है और उसको अपना वैल्यू फिर वो मेंटेन करके रखेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 10। तो जब F की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो गई तो फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत से मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, राइट? लेकिन वो 10 न्यूटन से ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता। But now the block starts to accelerate and we are in the realm of case 1 scenario 2, right, where there is motion happening, and that we'll discuss a little bit later on. So for us, this for the moment is remember ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं केस 1 सिनारियो 1। ये आया समझ में सबको? हाँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से 500 न्यूटन की फोर्स और लगा दिया ऊपर से। तो बेसिकली अब क्या हुआ, आप कुर्सी पे बैठ गए और somebody else is sitting on the chair. Now look at the FBD. What will be the change in the FBD? What will be the change in the FBD? Well, अगर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा है तो यहाँ पे 500 न्यूटन आ जाना चाहिए, ठीक है ना? Now, please tell me the value of N that was before. So N was equal to mg. Right? N was equal to mg. लेकिन जब ये 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, हाँ 10 जी था, जब ये 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने तो ये जो नया n है ये हो जाएगा mg प्लस 500, 10g प्लस 500, 600, yes. Right? Now, please listen to my question. Please listen to my question very carefully. After the application of this 500 Newton force, will this condition be true? After this application of 500 Newton force, will this condition be true? It will no longer be true. Why will it not be true? Because remember that here there are peaks and valleys for both the surfaces. And when you are applying this 500 Newton, what you are doing is you are increasing the intermeshing. And when you increase the intermeshing, then to break the peaks and valleys, more force is required, because जब intermeshing ज़्यादा हो जाएगा तो जो पीक्स एंड वैलीज की विड्थ है जिसको आपको ब्रेक करना है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, that will become very large. So the interatomic, intermolecular forces that you have to go against will become very large. So when this happens, when F is equal to 30 Newton, block does not move. This implies that F is equal to 30 Newton. Friction की वैल्यू अब 30 न्यूटन हो गई,
And when F is equal to, I don't know, 100 Newton, block just moves. This means that now the maximum value of friction is 100. Not only the value of friction is dynamic, not only the value of friction, not only the magnitude of friction is dynamic, but it turns out that its maximum value is also dynamic. Okay. And what is happening here? What has happened to n? What has happened to n? अगर यहाँ पे मैं 5000 न्यूटन की फोर्स लगा दूंगा तो n क्या हो जाएगा? What will happen to n? अगर मैं यहाँ पे 50,000 न्यूटन की फोर्स लगा दूंगा तो what will happen to n? It will keep on increasing. Okay? It will keep on increasing. This means that this means that n is a direct measure. क्या लिख दिया भाई मैंने? M is a direct measure of the intermeshing of the surfaces. अगर n ज्यादा है तो इंटरमेशिंग ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ that the maximum friction force must be proportional to n, and this maximum friction force therefore must be equal to some constant into n, and this constant we call mu s. Mu s, it is known as the coefficient of static friction, right? What is the implication of static here? Static का मतलब हुआ केस वन सिनारियो, स्पेलिंग बड़ी गलत लिख रहा हूँ, सिनारियो वन, हाँ स्टेशनरी, राइट, as opposed to kinetic friction. Kinetic friction would be the friction acting between two moving objects. Static friction would be the friction acting between two objects which are stationary with respect to each other. Right? Remember that I'm only talking about this condition. या जब 500 न्यूटन लगा दिया तो I'm only talking about this condition. Right? ये आया सबको समझ में? Is this understood by all? Is this understood by all? So, this is the maximum value of friction. This is the maximum value of friction. If one object moves, then it is kinetic friction. Okay? When both the surfaces are stationary with respect to each other, that is static friction. If one surface is moving, then it is kinetic friction, and we'll come to that. Aji, today only we'll come to that. We'll come to that in 10-15 minutes. Okay, now moving ahead. Please look at the first question that we did. मैं applied force तनीषा तो आपके ऊपर है ना. Applied force is not proportional to m. आप अपनी चेयर को एक उंगली से धक्का दे दो, आपके ऊपर है. आप अपनी चेयर को खींच के लात मार दो, आपके ऊपर. In the first case, you will be applying a small force, whereas in the second case, you will be applying a large force. When you apply a small force, then friction will match your force. And when you apply a large force, which is way beyond the maximum value of friction, right, then friction can do very little.
आपकी कुर्सी जो है वो उड़ते हुए जाएगी वहां से, बहुत तेजी से मूव करेगी, राइट। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग पार्ट अभी नहीं डिस्कस करेंगे। सो आया समझ में तनिषा ये? अब एफ अप्लाइड आपके ऊपर, एफ अप्लाइड इज एन एक्सटर्नल एजेंट अप्लाइंग ए फोर्स, ओके। एफ अप्लाइड इज mg का कंपोनेंट, जैसे हमने लास्ट क्लास में निकाला था। it has got nothing to do with normal reaction, okay। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई, क्विकली। हो गया? चलो, now please open your copies and look at question number 1 that we did in the last class. Okay, question number 1 that we did in the last class. Okay, so what did we do? हमने क्या किया? We draw an FBD. Okay, we drew an FBD for the block, and this FBD was without friction. उसके बाद क्या किया? उसके बाद से we found F applied. अगर F applied ambiguous नहीं है, अगर F applied ambiguous नहीं है, याद है ना लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 F applied was ambiguous. इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज थी, दिस और दिस। पहले में और दूसरे में the value of F applied was fixed. So we find F applied. Then we find the value of N. Then we draw friction on FBD. And then we apply second law. Right? This is how you're going to handle what? How you're going to handle what? Case 1 scenario. Please look at question number 1. I'm going to do this. Okay. The question is that for parts 1 and 2, find F if the block just moves, or alternatively I could have written just does not move. Right? It just moves or just does not move का मतलब I hope आपको समझ में आ रहा है. The block just does not move, just move, that means friction has reached its maximum. Block just moves, friction has reached its maximum value. Okay, so let me show you how to do this. Please look at question number 1. Draw the FBD. MG N F. Find F applied. F applied is equal to F. Find the value of N. N is equal to M. ये हमने किया हुआ, ये सब हमने किया हुआ, right? All we have done. Draw F on the FBD.
तो हमें मालूम है कि फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू एफ अप्लाइड, सो आई हैव ड्रॉन एफ on the FPD. And now I'm going to apply the second law. Okay? I'm going to apply the second law. Capital F is equal to small f max, which is equal to mu n, which is equal to mu mg. Right? और यहाँ पे दिया हुआ है that coefficient of friction is equal to. So let me repeat what I have done. मैंने पहले FBD बनाया. We did that in the last class. I found F applied. We did that in the last class. There is no ambiguity here. We found the value of n. I have found the value of n. We did that in the last class because we know that the object is not moving, right? Then I have drawn friction on the FBD. Okay, and I can draw this because F applied does not have any ambiguity. So I know that friction will be opposite to F applied. And since the question specifically states that the block just moves, since the question specifically states that the block just moves, right? So this means that F is equal to F max. And then I apply the second law. Second law में the block just moves or the block just does not move का मतलब होता है acceleration is zero. Okay? So again, let me write this. Block just moves or the block just does not move. This also implies that acceleration is equal to zero. अगर acceleration zero है, right? अगर acceleration zero है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होने चाहिए. तो F must be equal to F max, which is equal to mu n, and n I already know is equal to mg. So F is equal to mu mg is the condition, is the value of F for which the block just does not move. अगर मैं mu mg से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जरा सा भी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, a block will start to move. ये सबको आया समझ में? Is this understood? Anything which is not understood, please tell me. And please repeat the question. Please do the question yourself for part 2, for the second diagram that we had drawn yesterday. Please tell me the value of F for which the block just moves or just does not move. The coefficient of friction between the block and the floor is mu. I will draw it for those of you. हाँ, just moves or just does not move same ही है. हाँ, ये मैं सब लोग समझ रहे हैं.
ऋषिक, अब आंसर में एफ नहीं आना चाहिए ना, मैं एफ पूछ रहा हूँ और आप आंसर में एफ बता रहे हो मेरे को, तो दैट इज नॉट करेक्ट। प्लीज सी व्हाट टू डू। नहीं तन्मय, गलत। बहुत सही। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। आदित्य थोड़ा सा गलत किया है, थोड़ा सा फिर से देखो। मेड अ सिली मिस्टेक। नहीं प्रसन्ना, गलत। आपके आंसर में एन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट हैव एन इन योर आंसर। एन इज एन अननोन। नहीं राधिका, गलत है। Look at the value of n. You are getting the value of n wrong. नहीं सत्यम, n का वैल्यू देखो। n का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हाँ अभिजीत, अब थोड़ा सा सही किया बट गलत है। आंसर में तन्मय कैपिटल एफ नहीं आ सकता है, मैं कैपिटल एफ की वैल्यू मांग रहा हूँ ना। यश, गलत। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। आंसर में एफ नहीं आ सकता है। हाँ गुड जो है, एक चीज मिसिंग है बट ठीक है। हाँ फाइनली सही आंसर, यस। नहीं राधिका, गलत। देखो, so we have mg and f। ये इंटरेक्टिंग सरफेसेस हैं, तो हाँ पसंद है। ये इंटरेक्टिंग सरफेसेस हैं, तो नहीं अभी गलत। The components will be f cosine theta, f sin theta. From the FPD, okay, now I have to find the right.
F applied is equal to F cosine theta. Then I have to find the value of n. N plus F sine theta is equal to mg. N is equal to mg minus F sine theta. Then I have to draw friction on the FBD. And since the block just moves, this implies that F must be equal to F max. So the second law tells me that F cosine theta will be equal to F max will be equal to mu n. F cosine theta will be mu into n, which is mg minus F sine theta. F cosine theta will be equal to mu mg minus mu F sine theta. F cosine theta plus F into mu sine theta is equal to mu mg. This means that F is equal to mu mg upon cosine theta plus mu cos. So most of you were making a very, very simple and a very, very rookie mistake, and that was to take the value of huh, and that was to uh, take the value of n as simply mg. But I told you time and again that n ka value is unknown. You have to work it out. In the previous example, it was mg definitely, but in this example, n is not equal to mg. Okay. So one more question just for you. Find find f max. क्या हुआ भाव्य? हेलो हेलो. हाँ एक मिनट. F max को लिख दिया. Find f so that the block just moves. हाँ भाई, पुराने स्लाइड पे जा रहा हूँ ना. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम. मैंने एफ का बस वो चेंज कर दिया. हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया?
हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यस, सेम आंसर तो नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट ऑलमोस्ट सेम आएगा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही। हाँ भाव भी बिल्कुल। हाँ प्रसन्ना, नीचे देख क्या लिखा है यार, क्या क्या किया है, क्या आंसर दिया है तुमने। नहीं भाई, सो दैट द ब्लॉक्स जस्ट मूव, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। 110, 110, 110। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। ना, नहीं नहीं सही है, सॉरी। अरे तेरा गलत है। एक मिनट को। हाँ राधिका बिल्कुल सही है। 110 मेरे को किसने बोला था? भाविया गलत है ये। सुदीप गलत आंसर है। हाँ फिर सही, तो एक बार बता चुका हूँ, सही है। हाँ भाविया सही।
यस, एब्सोल्युटली राइट। ना नाम भी लिख दिया करो यार आईडी में। भाई जोहेब 2.5 न्यूटन कहाँ आएगा? 2.5 न्यूटन से 10 किलोग्राम ब्लॉक, 15 किलोग्राम ब्लॉक कहाँ मूव हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही। I'll just be I'll just be back. 2 minutes. 2 minutes. I'll be back. हाँ भाई, sorry. हाँ. So for the first one, most of you have got this correct. The forces are mg n f. ये सरफेस है, तो जो कंपोनेंट्स होंगे एफ के, वो होएगा एफ कोसाइन थीटा, एफ साइन थीटा, right? So we get f applied, f cos theta
N is equal to mg plus f sine theta. Friction must be opposite to F applied. And if I apply the second law, so since block just moves, this is very important. F cos theta is equal to mu n. So F cos theta is equal to mu mg plus mu f sine theta. So F into cos theta minus mu sine theta is equal to mu mg, and then you can find the value of F. For the second wala problem, again most of you got it correct. That was very nice. So F max for this guy, F max for this guy is mu n, which is mu mg. In this case, please notice that n is equal to mg, because if I were to draw the FBD for the 5 kg block, I would get 5g, I would get n, I would get f, and I would get t. यहाँ पे by the way f applied की ambiguity है क्या? Please look at the FBD that I have drawn for the block 5 kilogram. Is there an ambiguity in F applied? What is the value of F applied? What is the value of F applied? It is F minus T. There is no ambiguity. There is no ambiguity because जब ये F मैं अप्लाई करूंगा तभी यहाँ पे टेंशन आएगा, नहीं तो टेंशन नहीं आएगा. Right? This is very weird sort of situation. But यहाँ पे कोई ambiguity नहीं है. So n का value is 5g. So F max must be equal to mu mg, which is 0.5 into 5 into 10, which is equal to 25. If I draw the FBD of the 10 kg, again n will be equal to mg. So F max will be equal to mu mg, which is equal to 0.6 into 10 into 10, which is equal to 60 Newton. Now, since these two blocks are connected to each other by a string, it is guaranteed that अगर इसका acceleration a है, तो इसका भी acceleration a होएगा. Therefore, I can consider this whole thing to be a single system. And if this is a single system, then the maximum friction force that this single system can apply must be equal to 60 Newton plus 25. Therefore, F, for which the two blocks just began to move, must be equal to 85. Right? Simple and straightforward. हाँ तो पार्थ मैंने बोला ना. Now you will notice that there are a few things remaining because last class में जो हमने 6 problems करी थी, out of those 6, 2 we have handled, 4 अभी मैंने छोड़ी हुई हैं. उन 4 पे वापस next class में आएंगे. So now for the remainder of this class, I want to discuss case 1, scenario 2.
सो क्या होएगा यहाँ पे? वन सरफेस is fixed, other surface is moving, right? Case 1, scenario 2. One surface is fixed and the other surface is moving. And what I have to communicate with you is the magnitude of friction and the direction of friction, right? So for, अच्छा हाँ यहाँ तो मैंने magnitude बताया नहीं. Let me just, we've already discussed this, so let me just write it down in formal words. So magnitude. If the magnitude of F applied is less than mu n, less than mu n, this implies that friction, magnitude of friction is equal to magnitude of F applied, right? It matches. And if F applied is greater than equal to mu n, then this implies that the magnitude of friction is equal to mu n. तो अगर F applied मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल है या उसके बियॉन्ड चला गया, तो जो फ्रिक्शन है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रह जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, राइट? So here this is sort of variable, but this is fixed, right? यहाँ पे सिनारियो 2 में magnitude is fixed. It is equal to mu km. Mu k is the coefficient of kinetic friction. If only one mu is given, then assume that mu s is equal to mu k is equal to. Generally, mu k is less than mu s. Right? ये चीज आपने एक्सपीरियंस किया होगा. If you want to move something heavy, box, let's say on the floor, you want to move it. It is only the point at which the box starts moving. Up till that point, you require a lot of effort. But once the block is moving, उसके बाद उसको मोशन में रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, right? Because once the block is moving, then you are actually dealing with kinetic friction, which is less than static friction. However, if only one mu is given, तो फिर हम assume करेंगे कि दोनों mu same. The direction of friction in this case is again not a very difficult thing. The direction is opposite to velocity.
irrespective of the direction of F applied. ओके, अब F applied का F applied के डायरेक्शन से अब कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना है ही है, बिकॉज एफ अप्लाइड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा तो उसी के ऑपोजिट रहेगा, राइट? ओके, ठीक है, इतना आया समझ में सबको? वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का मतलब मालूम है मेरे को? हाँ, तो अगर वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है और एफ अप्लाइड की कुछ और डायरेक्शन, तो जो फ्रिक्शन रहेगा वो वेलोसिटी के ऑपोजिट रहेगा, एफ अप्लाइड के ऑपोजिट नहीं रहेगा, अगर दूसरा सरफेस मूव कर रहा है तो, राइट? और ये सिनारियो 2 में एक और कंडीशन है, सो लेट मी राइट दैट डाउन। ये सिनारियो 2 में एक और कंडीशन है, एंड दैट इज दैट एफ अप्लाइड is not equal to 0. So there is a third scenario as well. हो सकते हैं ना प्रसन्ना, कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है और मैंने उसके ऊपर कहीं फोर्स लगाया, F applied is not equal to 0. These are three conditions. There is a scenario 3 as well, जहाँ पे F applied will be equal to 0. Right? We'll see that later. Okay. So, one more question. Find the acceleration of the block.
म्यू लेस देन tan थीटा दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू गिवन है, यू कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू, इट इज गिवन. वेरी गुड अभिजीत, यस. एम नहीं आएगा ना राधिका उसमें, ये फोर्स आपने निकाला ना, दिस फोर्स विल पुट इक्वल टू एम ए. So the only difference between the previous scenario and this scenario is that when you apply Newton's second law of motion, the net forces will not be equal to zero, but the net forces will be equal to ma, right? चलो भाई देखो सब लोग बहुत ही ध्यान से, एवरीबडी. हाँ बिल्कुल सही, यस. प्लीज सी केयरफुली. स्टेप 1, draw the free body diagram without friction. mg बिल्कुल सही राधिका. n सरफेसेस ये रहे, तो मेरा जो एक्सिस बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा. ये एंगल थीटा है, this will become mg cosine theta, this will become mg sine theta. So I arrive at the conclusion that F applied is equal to mg sine theta. Okay, so F applied is equal to mg sine theta. इसका मतलब ये हुआ that जो फ्रिक्शन होएगा इस डायरेक्शन में. Now since they are telling us to find the acceleration of the blocks, this surely means that we are talking about case 1 scenario 2. And case 1 scenario 2, हाँ प्रसन्न, case 1 scenario 2 tells us that अगर मोशन हो रहा है तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू मस्ट हैव रीच्ड इट्स मैक्सिमम, राइट. अब यहाँ पे ये फ्रिक्शन की, ये जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है ये नेगोशिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, एडजस्टिंग नहीं है. Now I can apply the second law. Now I can apply the second law, and that is mg sine theta minus f max, which is mu n, must be equal to m. और यहीं पे हमने n का वैल्यू भी निकाल दिया, n is equal to mg cosine theta. अभी ये y एक्सिस के अलोंग तो कूद नहीं रहा है, डेफिनेटली. So this implies that we get mg sine theta minus mu mg cosine theta is equal to ma. This implies that a is equal to g sine theta minus mu g cosine theta. As much as I hate to say it, but you must remember this.
ओके, सेकेंड वाली प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन हो रहा है और हमें मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन हो रहा होगा क्योंकि दोनों ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो आई कैन टेक दिस एज ए कंप्लीट वन सिस्टम, और ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए दिया है क्योंकि हम यहाँ पे एफ मैक्स निकाल चुके हैं। तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा 85 न्यूटन। सेकेंड लॉ की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 100 माइनस 85 न्यूटन इज इक्वल टू एम ए। 15 is equal to 15 a is equal to 1 meter per second। ठीक है, राइट। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। प्लीज नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग HCV एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रिक्शन वाला जो ट्यूटोरियल है, यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रिक्शन वाला बुकलेट है। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट वी हैव केस 1 सिनेरियो 1 जहाँ पे कोई मूव नहीं कर रहा है, वो आप कर सकते हो। केस 1 सिनेरियो 2 जहाँ पे मोशन हो रहा है और एफ अप्लाइड नॉट इक्वल टू 0 है, आप कर सकते हो। केस 1 सिनेरियो 3 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और केस 2 उसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सब मेरे को मालूम नहीं है। चलो, I'll see you then in the next class, day after tomorrow. Please practice problems. More you practice, better you will get. And please send them over to me also. Chalo, okay. Bye bye.